आज टेस्ट है आप लोग का नेटवर्क का। नेटवर्क कंप्लीट हो 2 पोर्ट का टेस्ट है। हाँ बट ठीक है उसे। ठीक है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेड मार्कर एक बार बोल दीजिए सचिन। हाँ है यहीं पे। ठीक है स्टार्ट करें हम लोग। कॉन्वोल्यूशन पे क्वेश्चन बाकी था पता है, लास्ट क्लास में शायद बोला था। एक हेलो यू, एक क्वेश्चन बोला था y of t at t is equal to -2. This type of question will remaining in convolution. This type of question remaining in convolution. I said in last class. So what? We do this question or start new chapter? नहीं नहीं करवाना है। This type of question remaining. Write down. Write down question. The waveform of x of t and h of t are given below. The waveform of x of t and h of t is given below. This is Rxt and this is our h of t. Y of t is equal to x of t convolve with h of t. Then find the value of y of t at t is equal to -2.
Find out. Try this one. Very good question. Find out. आप तो लेक्चर देखे ही नहीं है कॉन्वोल्यूशन का. Will you try or I will discuss? You try or discuss. ट्राई कीजिए एक बार. ट्राई 2 मिनट दीजिए. मैं सॉल्व कर. ये डेल्टा फंक्शन डेल्टा है ना, इम्पल्स, इसका इक्वेशन लिखिए. Tell me the properties of x of t convolve with del of t minus t1. What we will get? आपका u x of t convolution with del of t minus t1. What we will get? Convolve with del of t minus t1. X of t convolve with del of t minus t1. What we will get? X of बस use this properties here. Use this properties here. I will discuss or you will try. You ऐसे करो. Are you trying? You or need to discuss? Discuss. Tell me, Sachin. Can we write down like this?
इसीलिए तो मैं सचिन को देखने बोल रहा था। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? सी हियर, what is our x of t? Can we write down like this? Any problem? Can we write like this? You? Any problem? Anyone? Any problem? Here. Any problem? Any problem till here? Any problem? Anyone? Till here? Any problem? So, see, our h of t is this. Can we draw h of t minus 1.5? Tell me you. Can we draw h of t plus 1.5? If h of t is this, can we draw h of t plus 0.5? Can we draw h of t minus 0.5? Can we draw h of t minus 1.5? Draw it in your copy. If this is h of t, then draw h of t plus 1.5, h of t plus 0.5 and minus h of t minus 0.5 and minus h of t minus 1.5. Draw in your copy. All. You all draw it in your copy. चार अलग ग्राफ बनेंगे, हाँ, और चारों का वैल्यू -2 पे जाके देख लेंगे। ड्रॉ कीजिए अपने को अपनी कॉपी में। Not see the blackboard, draw in your copy.
पहले आप ड्रॉ कीजिए, ये ड्रॉ कीजिए पहले. एट फर्स्ट you all try to draw this waveform, then we see where we need to calculate the value of y of t. ड्रॉ कर लिए सचिन? ड्रॉ कीजिए. ड्रॉ डन. अब ये तो मैंने सिखा सकता हूँ ना. एच ऑफ टी अगर दिया हुआ है, एच ऑफ टी प्लस 1.5 ड्रॉ करना है, एंड दिस टाइप ऑफ वेवफॉर्म वी विल गेट. अब ये तो मैं हर क्लास में नहीं बता सकता हूँ. एच ऑफ टी प्लस 1.5 है, मतलब सिग्नल क्या होगा? लेफ्ट शिफ्टेड. तो वही तो वहां पे हुआ है. एच ऑफ टी माइनस 0.5 है, देन सिग्नल विल बी राइट शिफ्टेड. वही वहां हुआ है, देखिए. आप बताइए आंसर. ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर. What's your name? Munim. Now tell me the answer, Munim. नहीं समझ आया आपको? वेवफॉर्म नहीं समझ आया क्या? यार ये एच ऑफ टी है, ठीक है. एच ऑफ टी प्लस 1.5 ड्रॉ करना है. तो इसमें क्या करेंगे यार? इसको लेफ्ट शिफ्टेड होगा ना, तो माइनस 1.5 ऐड कर देंगे ना. तो माइनस 1.5 ऐड करेंगे तो ये -2 हो जाएगा. यहाँ पे जब माइनस 1.5 ऐड करेंगे तो ये -1 होगा. बस वही तो किया हूँ. y ऑफ टी पे टी, y ऑफ टी पे, y ऑफ टी का t इक्वल टू -2 पे वैल्यू बताइए. नहीं, स्लोप क्यों निकालना? y ऑफ टी क्या है? बस वही चीज तो पूछ रहा था. नाउ सी, y ऑफ t एट t इज इक्वल टू
What is the value at minus 2? What is the value at minus 2? What is the value at minus 2? And what is the value at minus 2? This is the numerical answer type. This is a 2 marks question, not a 1 mark. तो फिर हमें वैल्यू कैसे पता चलेगा? लेकिन अभी आपको लग रहा है कि बहुत मतलब लॉन्ग स्टेप है, ऐसे वैसे, ऐसा कुछ नहीं। जब आप बनाएंगे तो फिर से बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर हम लोग इतना लिखेंगे क्यों? y ऑफ टी, h ऑफ टी, हम लोग तो सीधा यहाँ से देख लेंगे ना कि कॉन्वोल्यूशन कहाँ कहाँ पे हुआ है। डन? हाँ पूछिए। ये माइनस 2 पे वैल्यू क्या है? यहाँ पे माइनस 2 पे वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब 0। यहाँ पे माइनस 2 पे वैल्यू क्या है? यहाँ पे माइनस 2 पे वैल्यू क्या है? दैट्स ऑल 0। Done? Rub the board. So here our convolution ends. Now we will come to our next chapter. इसमें convolution पे हाँ होंगे। इलेक्ट्रिकल के हो ना तुम? मोर देन एनफ। जितना प्रॉब्लम क्लास में हुआ है मोर देन एनफ। वैसे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वो 35 है। हाँ वो ठीक है। आप टेस्ट लीजिए ना, टेस्ट मारिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, सबसे अच्छा मतलब ऑप्शन वही है। ये चैप्टर कंप्लीट होने दीजिए, बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टीज। उसके बाद आपका सिग्नल पार्ट 1 टेस्ट देने लायक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर सिग्नल का टेस्ट दीजिए, वहां पे आपको ये सब क्वेश्चन दिखेगा। डन? So we start our new chapter, that is basic system properties. Write down heading. Done? दो मार्क्स में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा भी तो, इन कॉन्वोल्यूशन 2 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। हाँ 8 to 10 मार्क्स। इस बार ज्यादा आया था। क्या कंट्रोल? हाँ बट कोई इस बार अच्छा पेपर आएगा। नहीं इस बार 60,000 का। देखिए कंपटीशन जो है ना वो टॉप 5,000 में, बस आप कट ऑफ निकाले टॉप 5,000 में पहुंच। राइट डाउन चैप्टर 3 बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टीज।
here this is system whose output is y of t and input x of t. Y of 1, the value we will get x of 1. Okay, the value we will get x of 0 and the value we will get x of 2. देखिए here input is x of 1, output is y of 1. Y of 1 depends on present input. This is called present input. What? Write down. Present input. Output depends on present input. See here, the output depend on past input. Understand? This is called past input. This is called past input, and this is called future input. Write down. जब इनपुट प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगा तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू x ऑफ 1. जब पास्ट पे डिपेंड करेगा मतलब पास्ट मतलब जैसे देखिए हाँ 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 मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, जब हमारा आउटपुट इधर डिपेंड करता है इधर, दैट इट इज कॉल्ड पास्ट. जब हमारा इस पे डिपेंड करता है इट इज कॉल्ड फ्यूचर, एंड जब यहां डिपेंड करता है इट इज कॉल्ड प्रेजेंट. ओके, so what we need to study in this chapter? See your syllabus. Okay, write down first heading. Write down first heading, static and dynamic system. A static and dynamic system. Write down first, a static system. Static system. Write down. If output of system, if output of system depends only on present value of input, if output of system depends only on present value of input, then system is called static system. Write down second point. क्या बोले? If output of system depends on present input, then it is called a static system. मतलब इसके पास कोई मेमोरी नहीं होता है, जहां पे वो खड़ा रहता है जिस प्रेजेंट पे रहता है उसी प्रेजेंट पे वो वैल्यू उसको मांगता है. मतलब राइट डाउन, इट इज अ मेमोरी लेस सिस्टम. इट इज अ memory less system. Done. Write down second, dynamic system. If the system output, if the system output depends on past or future value of input, if the system output depends on past or future value of input at any instant of time,
at any instant of time, then the system is called dynamic. Tell me, it is memory or not? So write down, it is a system with memory. It is a system with memory. So see some example on this. Understand what is static dynamic? Understand with some example. Understand? Tell me, you all. Example 1. Y of t is equal to, it is a very important chapter and 1 to 2 marks your in this chapter will ask in your exam. Y of t is equal to 2x of t. Tell me, it is a static or dynamic? Need to discuss why it is static? Need to discuss? T is equal to 1 पे देखिए, y of 1 is equal to 2 into आउटपुट, इनपुट पे डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट वैल्यू पे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैटिक. पुट इन योर कॉपी दिस टाइप ऑफ एग्जांपल. टेल मी अबाउट दिस. टेल मी अबाउट दिस. So write down question. Check static and dynamic system. Check static and dynamic system. Write down first question. Y of t is equal to x of t plus 1. Write down second. Y of t is equal to x square of t plus x of t plus 1. X of t plus 1. X of t plus 1. Write down third. Y of t is equal to x of 2t t. Write down 4. Y is equal to e to the power x of t. Y of t e to the power x of t. Write down 4. Write down next question. Y of t is equal to even part of x of t. Even of x of t. Even of x of t. बताइए, पहले बताया हूं मैं. Yes. Tell me. Okay, tell me the first 4 answer. First dynamic. Third. Fourth. Okay. Tell me about this.
दिस इज y of t done. What is it? U. What is it? Dynamic. Write down next question. Y of t is equal to real of x of t. Tell me the formula of this. This is the formula. Tell me it is static or dynamic. Even x of t. ये क्या था बताइए, आप बताइए. ये वन and this is -1. So what will happen? Dynamic. Tell me about this. Why dynamic? When it is 1, 1, 1. And why it is dynamic? It is static. Done? Done? Write down next question. क्या क्या आपके यहाँ कैसे नहीं, कहीं पे t इक्वल टू माइनस या कुछ है क्या? 2 ऑफ टी स्केलिंग है क्या? नहीं है ना. जब t इक्वल टू 1 पे लेंगे तो ये x ऑफ 1, ये x कॉन्जुगेट ऑफ 1 by 2, then it depend on past or future, no, so it is called static. Write down. हाँ, real. Write down real. Write down next question. Y of t tell me about this. What is it? Why it is static? The value is depend on minus infinity, then depend on past, so it is called this question asked in GATE for 1 mark, बट उसमें कुछ और था, डायनेमिक और एक चीज और देखना था, बट एक डायनेमिक था, मतलब ऑप्शन 2 थे, डायनेमिक और शायद लीनियर या कुछ थे. डन. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. y ऑफ t समझ आया? वाई इट इज डायनेमिक. हाँ, फास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. y ऑफ t इज इक्वल टू dx ऑफ t by dt. x of t by dt. What is it? Static or dynamic? It is dynamic. What does it mean? Change in x of t with respect to t. Change in x of t with respect to t. तो मतलब इसमें जब चेंज होगा विद रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग, तो वो या तो पास्ट या तो फ्यूचर के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, देन इट इज कॉल्ड
Understand you why it is called dynamic? Change of x of t with respect to time. Done? So everyone getting what is static dynamic? Any problem? पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, जाएंगे वहां भी जाएंगे, वो अपना अपना है, जहाँ पे जिनको अच्छा लगे जाएंगे वहां पे जाएंगे, वी विल गो देयर. सो सी द नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन. एनी प्रॉब्लम इन स्टैटिक डायनेमिक? Write down next topic name, causal and very important. आपका causal नॉन causal आ गया तो पहले हल्ला कर रहे थे causal सर causal. अच्छे हाँ, तो अब अच्छे से समझिएगा. Write down causal system. If output of system is independent of future value of input, then system will be causal. If output of system is independent of future value of input, then system will be causal. Write down second point. All practical system are causal system. All practical system are causal system. So see the example here. Tell me, it is causal? Future पे depend? Tell me, it is causal? Why no? फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है क्या? बस कॉजल उसको नहीं बोलेंगे जो फ्यूचर पे डिपेंड करेगा. डन. यू एट y इज ऑफ 1, इट्स वैल्यू ऑफ x ऑफ फ्यूचर पे नहीं डिपेंड कर रहा है. टेल मी दिस वन. टेल मी दिस वन. Why? Tell me about this. Causal. Write down next. Non-causal. You are getting? You? Write down next. Non-causal system. If, write down, if output depends on future value of input, if output depends on future value of input at any instant, then system will be non-causal. If output depends on future value of input at any instant, then system will be non-causal. Done? So give some example here. Tell me.
It is it is huh? Non-causal. It is put in your example. Put it in your copy. Write down anti-causal system. Anti-causal system. Anti-causal system. A non-causal system. A non-causal system in which a non-causal system in which output depends only on future value of input. Output depends only on future value of input. A non-causal system in which output depends only on future value of input, then system is called anti-causal system. Repetition. Write down one example of this. This is the example of anti-causal system. Write down one point also. Only future value पे depend नहीं कर रहा है. Write down one point also. All anti-causal system are non-causal. All anti-causal system are non-causal, but converse of this statement is not true. सारा एंटी-causal सिस्टम नॉन कॉजल होगा, बट सारा नॉन कॉजल सिस्टम जरूरी नहीं है कि वो एंटी कॉजल होगा. ओके, तो राइट डाउन क्वेश्चन. चेक causal and non-causal system. Check causal and non-causal system. Write down first question. Y of t is equal to x of 3t. Write down second question.
टेल मी. बताइए. फर्स्ट वाला एंड सेकेंड. Second is causal and first is non-causal. Need to discuss. देखिए सेकंड वाला. y minus 3 when minus 3 t is less than 0. इस केस में हम लोग इसको लेंगे. the next of minus 9. the value depend on past. the value depend on past. the output depend on past value. no, why no? minus 3 and minus 9. माइनस 3 पे आपको चाहिए तो हमको माइनस 9 पे पॉइंट मिल रहा है उसका, उसके लिए ये पास्ट नहीं है, इससे पीछे नहीं है पास्ट. so it is causal. and now see when t greater than 0. y of 2 x of 1, it is also past. it is also past. so it is causal. Then write down question number 3. y of t is equal to x of minus t. y of t is equal to x of minus of t. Tell me about this. Non-causal. It is non-causal. Write down 4. y of t is equal to e to the power x of t. Causal. Write down 5. y of t is equal to conjugate symmetry of x of t. y of t is equal to conjugate symmetry of x of t. What is it? Causal, non-causal? Tell me. Non-causal. Tell me the formula of this. This is y of t. C at t is equal to minus 1. This is future value or not for this output. So it is non-causal. Write down question number 6.
Tell me this one. नॉन कॉजल. देख लेते हैं. It depends on future value. So it is non-causal. Write down 7. Problem number 7. Y of t minus infinity to t x of tau d tau. Tell me. Huh? Causal. Then tell me about this one. Tell me. Tell me this one. Non-causal. Okay. So causal and non-causal. Done. Come to next property. What is third? Linear, non-linear. Write down. First linear system. Write down first linear system. It follows law of superposition. Superposition. And what is law of superposition? So write down. The law of superposition is first law of additivity and second is law of homogeneity. Write down second non-linear system. It violates law of superposition. It violates law superposition. VIOLATE. LATE. Law of superposition. Superposition. So first understand what is law of additivity.
here if any system whose input is x1 of t and output is y1 of t, and another system whose input is x2 of t and output is y2 of t, तो ये दोनों यहाँ पे जाके ऐड होगा and we will get y1 of t plus y2 of t and it is equal to y of t. Write down. एंड यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा y डैश ऑफ t. So write down if y dash of t is equal to y of t, if y dash of t is equal to y of t, the system will be follows law of additivity. Write down second. If y dash of t is not equal to y of t, then system will be non-linear. If y dash of t is not equal to y of t, then system will be non-linear. Non-linear. Then done. हमें इतना चेक करने का जरूरत नहीं, बहुत सारा शॉर्टकट है इसमें, तो हम लोग देख के तुरंत बता देंगे सिस्टम लीनियर है नॉन लीनियर. डन. तो सी वन एग्जाम्पल है. Tell me law of additivity satisfied or not. What is y1 of t? What is y2 of t? 10 plus. So what is our y of t? y1 of t plus y2 of t and it will 20 plus and what is our y dash of t?
So y of t is not equal to y dash of t. So system will be non-linear. इतना जाने का जरूरत भी नहीं है. Y is equal to mx plus c. Is it linear or non-linear? Is it non-linear? Y is equal to mx is linear. बस ये चीज देख के हम लोग बता सकते थे. Now come to law of homogeneity. Done? Now see law of homogeneity. Law of homogeneity. A system whose input is x of t and output is y of t will multiply with some constant k, and this will become k into y of t. And next, x of t then multiplied with some constant k, this will become k into x of t. It is the input of any system whose output is y dash of t. So write down, if y dash of t is not equal to ky of t, if y dash of t is not equal to ky of t, then system will be non-linear. Then system will be non-linear. Write down second point. If y dash of t is equal to ky of t, if y dash of t is equal to ky of t, then system will be follow linear of homogeneity. Linear of homogeneity. Tell me, it is linear or non-linear? Why it is linear? Output directly proportional to input का square. Non-linear. Okay? Put it in your example. Now come to question. Check linear and non-linear system.
check linear and non-linear system. Write down first question. Rub the board. Write down first one. Y of t x cos t. Tell me. Apply. It will satisfy law of homogeneity or law of additivity and law of homogeneity. See. Linear. अप्लाई करके देख लीजिए एक बार एडिटिविटी और सुपर और होमोजेनिटी अप्लाई करके देख लीजिए. एडिटिविटी और होमोजेनिटी अभी सीखे ना, उसको अप्लाई कीजिए यहाँ पे. एडिटिविटी सेटिस्फाई है. अब सुपर वो देखिए होमोजेनिटी. डन. होमोजेनिटी और एडिटिविटी दोनों सेटिस्फाई है. So the system is linear. Okay. Need to discuss. Write down second one. Need to discuss. आप बोलिए. What will happen? ठीक है. What is y of t? Done. What is our y dash t? This is. So our law of additivity satisfied. अब हम लोग क्या देखना, लॉ ऑफ होमोजेनिटी. उसमें क्या करेंगे, k इंटू वाई ऑफ टी निकालेंगे. तो k इंटू वाई ऑफ टी, k इंटू एक्स कॉस ऑफ टी निकालेंगे. फिर y डैश ऑफ टी निकालेंगे. y डैश ऑफ टी इज इक्वल टू k वाई ऑफ टी. तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी आल्सो satisfied. So write down second question. Y of t is equal to x at cos t put log t. No need to solve, we can solve like this. Okay, इसी तरह कर सकते हैं. Third, y of t is equal to x of t square. We can do same like this. We can do like that. So write down one note. Important note. Put a star mark in this. Linearity of system is
independent of linearity of system is independent of time scaling either in x of t or y of t. और y of t. डन. टाइम स्केलिंग से इंडिपेंडेंट होता है लिनियरिटी. राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4. y of t is equal to x of t. Tell me it is linear or non-linear. y of t is equal to x of t. It is linear. It is also linear. It is also linear. It is also linear. Write down next. Y of t is equal to even part of x of t. Tell me it is linear or non-linear. लिनियर. बिकॉज लिनियर इंडिपेंडेंट होता है टाइम स्केलिंग का. राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. y of t is equal to sin t into x of t. Sin t y of t is equal to sin t into x of t. Tell me. Apply the law of additivity and law of homogeneity. It is linear, I think. y1 of t निकालिए ना. होमोजेनिटी फॉलो और वो देख लीजिए एडिटिविटी दोनों कर रहा है. मीन्स इट इज डन. Done or need to discuss? Write down 7 number. Problem number 7. So log t into x of t this is also linear. This is also linear. So write down one note. Put a star mark in this. Linearity of system is independent of coefficient used in
system relationship. Used in system relationship. Tell me, y of t, write down question, y of t is equal to t square into x of t. It is linear. सेम t के फॉर्म में है, इसका t के फॉर्म में है. y of t is equal to 10t into x of t. 10t sin 10 cos. Linear. Linear. y of t 10 plus x of t. It is y of t is equal to, अभी तो सॉल्व किए थे, नॉन लिनियर. y of t sin t plus x of t, non linear. Write down note. Put a star mark. If any added or subtracted term, if any added or subtracted term other than x of t or y of t is available in the system relationship, then system will be non-linear. If any added or subtracted term other than the system relationship, if any added or subtracted term other than xt or y of t is available in the system relationship, then system will be non-linear. So y of t, write down example, e of t plus x of t. Tell me, it is linear or non-linear? It is linear or non-linear? Write down next point. Integration and differentiation is a linear system. Integration and differentiation is a linear system. Write down example. Write down example in your copy. Write down next question. Y of t is equal to x of t plus x of t minus 1. Tell me, it is linear or non-linear?
Write down one note also. If output is summation of time shifted term of input. If output is summation of time shifted term of input, then the system will be linear. समझ आ गया? लिनियर नॉन लिनियर. राइट डाउन वन इंपॉर्टेंट नोट. if any non-linear operator example sin, cos, tan, cot, cosec, sec, cos inverse, cot inverse, sin inverse, put dash 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 like this, sin square, cos square, dash 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 like this, dash, log, exponential, log, exponential, modulus, root, dash dash dash, sampling, sync, signum, step, RAM. कहाँ तक पहुंचे? सैम्पलिंग, सिंक, सिग्नम, स्टेप, रैम, कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट सिमेट्री, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री, रियल पार्ट, imaginary part, etc. Either operate on x or y, then system will be non-linear. Either operate on x or y, then system will be non-linear. Write down example 1. Y of t is equal to sin x of t. First example. Second, y of t is equal to tan inverse x of t. Y of t is equal to modulus of x of t. X of t, tan inverse x of t. Log yt is equal to x of t. Log yt is equal to x of t. Y of t is equal to e to the power x of t. Y of t is equal to x of t to the power whole 1 by 5. Y of t
u x of t, y of t is equal to signum x of t, and y of t x conjugate of t, y of t is equal to sampling x of t, सारे के सारे नॉन लिनियर सिस्टम हैं। Write down next heading, transfer characteristics based question. Transfer characteristics based question. Write down system output versus system input graph. System output versus system input graph. Put example 1. Tell me it is linear or non-linear. Write down second example. It is. Write down third example. Okay. Fourth one. It is. Write down fifth. It is. Non. Put it in your example. It is what? Okay. ठीक है 10 मिनट का ब्रेक ले।